एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट स्टेप टू स्टेप कैसे फॉलो करते हैं, वो एल्गोरिथम आना चाहिए। दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ ACLS फॉर कार्डियक अरेस्ट। वैसे ACLS के बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं फॉर टैकीकार्डिया, फॉर ब्रेडिकार्डिया, फॉर टैकीअरिथमियास, फॉर ब्रेडिअरिथमियास, फॉर ओपियोइड इंजेक्शन। लेकिन हम आज सिर्फ कार्डियक अरेस्ट का ACLS एल्गोरिथम जो है वही डिस्कस करेंगे। अगर कोई पेशेंट है, चाहे वार्ड में है, चाहे OT में, ICU में, अगर कोई पेशेंट कोलैप्स होता है ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, तो हमें कैसे उसको ACLS एल्गोरिथम को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम बेसिक लाइफ सपोर्ट से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सर ने बताया, सबसे पहले हम CPR स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट स्टेप विल बी CPR। सबसे पहले हम कार्डियक कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे और ऑक्सीजन, क्योंकि हम क्लिनिकल सेटिंग पे है जहाँ पे हमारे पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो हम ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे, मॉनिटर्स अटैच करेंगे। ACLS और जो हमारा टर्शियरी केयर सेंटर है जहाँ पे हमारे पास पूरी टीम अवेलेबल है। आइडियली जो है ACLS की टीम में 6 मेंबर्स होते हैं। सबसे पहला जो है टीम लीडर। टीम लीडर जो है, टीम लीडर असाइन करेगा रोल्स टीम मेंबर्स को। टीम लीडर ही ट्रीटमेंट डिसीजन बनाएगा। टीम लीडर जो है वो टीम मेंबर्स को फीडबैक प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट इज टीम लीडर, अदर वन इज कंप्रेसर, वन फॉर एयरवे, वन फॉर ड्रग्स, वन फॉर डिफिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सर ने एक्सप्लेन किया था कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ये रिदम प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से कार्डियक अरेस्ट जो है, जो कॉज करती है कार्डियक अरेस्ट को। इनके अंदर बहुत सारे एबनॉर्मल फोकाई होते हैं जिनकी वजह से हार्ट का रिदम डिस्टर्बेंस होता है। तो ये शॉकेबल रिदम्स होती है, इसमें हमें डिफिब्रिलेटर की जरूरत होती है। डिफिब्रिलेटर क्या करता है? डिफिब्रिलेटर मायोकार्डियम को स्टन कर देता है, यानी कि जीरोइंग कर देता है। और जब एक बार मायोकार्डियम करेंगे, शॉक के बाद में इमीडिएटली CPR को रिज्यूम करेंगे। मीनवाइल जब CPR चल रहा है तो वन पर्सन विल बी सिक्योर IV और IO कैनुला। फिर उसके बाद में आफ्टर 2 मिनट्स फिर से रिदम को एनालाइज करेंगे कि रिदम शॉकेबल है कि नॉन शॉकेबल है। अभी भी रिदम अगर शॉकेबल है तो हम इसको शॉक देंगे, शॉक देते ही CPR रिज्यूम करेंगे। और आफ्टर 2 शॉक्स अब हम एपिनेफ्रिन देते हैं। हमारे पास IV कैनुला सिक्योर्ड है, यहाँ से हम ADR देंगे इसको और यहाँ से ADR पर 3 to 5 मिनट्स में रिपीट करेंगे। और आफ्टर 2 शॉक्स हम कंसिडर करेंगे एडवांस
और इसमें भी हम रिवर्सिबल, वी विल लुक फॉर रिवर्सिबल कॉजेज। अगर हमें कुछ रिवर्सिबल कॉजेज में कोई डायग्नोज हुआ है तो हम उसको ट्रीट करेंगे। और वी विल चेक फॉर रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन ऑल्सो, द साइंस ऑफ रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। अगर रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन अगर ऑब्टेन हो गया है तो ठीक है, अगर ऑब्टेन नहीं हुआ है वी विल कंटिन्यू CPR according to this algorithm. Is shockable rhythm, the left side of algorithm we will follow. If
सेकेंड डिफरेंस है चेस्ट कंप्रेशन की टेक्निक में। पीडियाट्रिक बीएलएस में जो टेक्निक है वो सिंगल रेस्क्यूअर और डबल रेस्क्यूअर के लिए अलग अलग डिफाइन की है। सो द सीपीआर टेक्निक्स फॉर सिंगल रेस्क्यूअर चेंजेस दोनों में है, टेक्निक भी डिफरेंट है, कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो भी डिफरेंट है। फर्स्ट सिंगल रेस्क्यूअर, आप अकेले हैं, कोई हेल्प नहीं है। द सीपीआर टेक्निक इज टू थंब एनसर्कलिंग टेक्निक और टू फिंगर चेस्ट कंप्रेशन। अगर आप सिंगल हैं, एएचए कहता है दोनों टेक्निक्स यूज करें, लेकिन हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में आते हैं। आप अकेले हैं, बच्चा आपके सामने कोलैप्स पड़ा है, अगर आपने अपने दोनों हाथ कंप्रेशन के लिए यूज कर लिए तो आपका दूसरा, आपके पास अब एक भी हाथ नहीं है, ना कॉल करने के लिए है, ना एयरवे चेक करने के लिए है, ना कुछ और। तो अगर आप सिंगल रेस्क्यूअर हैं तो इट इज बेटर टू गो फॉर द टू फिंगर चेस्ट कंप्रेशन टेक्निक सो दैट while giving two finger compression from one hand, the other hand can support the airway part, or if you are having a mobile, it can call someone to bring an AED. So, if it is a single rescuer, go for two finger compression technique. Ratio you are not going to follow is 30:2. If you are two rescuer technique, you can go for the thumb encircling technique. The thumb encircling technique includes placing both your hands to support the thorax of the urine, and your both the thumbs should rise just one finger below the imaginary line drawn between both the nipples. Your both thumbs should give compression at the lower one-third of the stomach to produce a कंप्रेस हो जाती है इस कंडीशन में, जो कि सुपाइन पोजीशन में है, और लैटरल पोजीशन में वो कंप्रेशन रिलीव हो जाता है। और अगर आपके पास स्टाफ की कमी है, आपके पास बीएलएस रेस्पॉन्डर नहीं है, तो एक 30 डिग्री 25 to 30 डिग्री का वेज आप पेशेंट के राइट हिप के सकते हैं ताकि लैब यूरिन डिस्प्लेसमेंट के लिए। This is algorithm. Patient is unresponsive, patient is not breathing, or uterus is at or above the umbilicus. At or above the umbilicus means this patient is pregnant for with more than 20 weeks. And then we have to activate emergency response system. In BLS response में minimum 3 additional staffs होने चाहिए और एक कोड फिक्स होना चाहिए हॉस्पिटल में। ये है कि अगर इन हॉस्पिटल अगर आपने किसी ने विटनेस किया कि पेशेंट वार्ड में एडमिट थी और कोलैप्स हो गई, ये इसलिए। उसके बाद विद इन 10 सेकंड्स में आपको कैरोटिड पल्स चेक करनी है। अगर पल्स है देन यू हैव टू फोकस ऑन वेंटिलेशन, यूज बैग एंड मास्क, गिव ब्रेथ every 5 to 6 seconds, that is 10 to 12 breaths per minute, and then check pulse again after 2 minutes. If there is no pulse, then we have to document that time and start the high quality CPR. Simultaneously, as it is as in hospital scenario, we have AED, so we have to apply AED. We have to perform appropriate airway management and continuous manual left uterine displacement. In AED, again same according to normal BLS, patient trigger is shockable, give CPR and resume, give shock and resume CPR, and if it's not shockable, resume CPR for 2 minutes and check rhythm again after 2 minutes. So chest compressions are same as in normal patient, and for appropriate airway management, open airway by using head tilt and chin lift maneuver if patient is not a trauma victim, and administer 100% oxygen at the rate of more than 15 liters per minute. When available, perform bag and mask ventilation. We have to make a proper seal of mask, ensure no leak around mask, and we have to prefer two-handed mask technique. Next one is deliver each rescue breath over 1 second. Give 2 breaths for every 30 compression, that is 30:2 ratio. Give a sufficient tidal volume to produce visible chest rise or fog within face mask. If not seen, we have to reposition the patient, reopen the airway, improve the seal, and we can consider using oral airway, and then again attempt ventilation. High quality CPR is going on. We can defibrillate patient as indicated.
any drugs that we are giving to adult patient, we should not think about कि fetal teratogenicity हो सकता है तो हम ये drug देंगे, ये drug नहीं देंगे. जो भी drugs अपन adult ACLS में देते हैं वो सारी drugs अपन pregnant patient को same dose में दे सकते हैं. There is no change in dose also. So if there is maternal cardiac arrest is on scene, then we have to consider the etiology of arrest, then perform maternal intervention, perform airway management, 100% oxygen and with avoidance of excess ventilation. Please IV cannula above the diaphragm because diaphragm is pushed upwards and gravid uterus is compressing IVC and aorta. So there may be there is hampered circulation. So it is preferable to keep IV line above the diaphragm. So whenever we give drug, it reaches in shorter time to the heart. And continue BLS or ACLS BLS according to BLS algorithm, high quality CPR, defibrillation and other ACLS intervention. In perform obstetric intervention, diaphragm displacement, fetal monitor, we should have to detach. The patient is in ward and there was fetal monitor, we have to detach the fetal monitor and then prepare for perimortem cesarean delivery. We have to perform perimortem cesarean delivery if there is no return of spontaneous circulation in 4 to 5 minutes, then we have to deliver the patient by immediate cesarean section. This immediate cesarean section should be performed not in OT, not in ICU. It is performed जहाँ पे patient है उसी जगह पे आपने को cesarean perform करना है. And this cesarean is not performed for the survival of baby. It is performed to increase the chances of survival of mother because fetus is compressing, uterus is compressing the IVC and aorta, and that hampers the circulation. So to relieve that obstruction on circulation, we have to perform this cesarean section. We just need a single scalpel. We don't need any antisepsis. We just cut patient's abdomen in a vertical line, like in emergency laparotomy, and then we have to remove the baby and seal the abdomen in continuous layer. All layers are sealed in a single layer. We need not to take the peritoneum different. We need not to take practice different. We have to suture everything together and then cut it and then shift the patient in ICU. So epinephrine is used in cardiac arrest mostly for its alpha-adrenergic effect, which causes systemic vasoconstriction and increased coronary and cerebral perfusion pressures and flows, thus facilitate the return of spontaneous circulation. ADR is available in 1:1000 concentration, that is 1 mg per ml ampoule. So peak plasma concentration reaches only after 90 seconds after intravenous injection. That's why it is rapidly acting drug and a wonder drug in CPR. Dose in cardiac arrest is 1 mg diluted in 10 ml NS, either IV or IO. IO access is very difficult in adult. It is a last resort when we can't get the IV access. But in pediatrics, sometimes we don't get IV access easily, then we can go for IO access. So ADR is repeated every 3 to 5 minutes according to AHA 2020 update. It can be given in not 3 to 5 minutes. It should be given after every 4 minutes to synchronize with the cycles. 2 cycles of CPR, that is 2 minutes, and then give ADR. If we give via endotracheal route, sometimes we don't get IV route. So if patient is already intubated, we can give through endotracheal route, but the dose should be 2 to 3 times higher, that is 2 to 2.5 mg diluted in 10 ml. Pediatric dose already Dr. Swati mentioned 0.01 mg per kg IV or IO. If patient survived in cardiac arrest, then the infusion dose in post cardiac arrest care should be 0.1 to 0.5 microgram per kg per minute. If the initial cardiac arrest rhythm is PEA, that is pulse electrical activity or asystole, that Dr. Shweta already mentioned, the administration of epinephrine is recommended as soon as vascular access is obtained. While in VT or VF, pulseless VT or ventricular fibrillation, the
vasopressin offer no advantages over ADR. That's why it was removed from 2015 guidelines. Third drug which is used in CPR is amiodarone. Amiodarone is considered a class 3rd anti-arrhythmic drug. We have a long classification of anti-arrhythmic drug, but it has characteristic of all the classes. That's why it's the best anti-arrhythmic drug used. It blocks sodium channel, that is the class 1 effect, beta blockade, that is the class 2 effect, and potassium channel blockade, that causes lengthening of cardiac action potential, that is the class 3 effect. Amiodarone is effective in suppressing both supraventricular as well as ventricular tachyarrhythmias. In cardiac arrest, consider amiodarone for refractory VF and VT. What is refractory VF and VT? Dr. Shweta told you the VT or VF which is unresponsive to shock, that is after 3 shock. Even after 3 shock, we could not get the return of spontaneous circulation or sinus rhythm. And CPR and vasopressor, that is ADR. We have already given 3 shock, we have already given ADR, and we are continuously doing CPR. Still we could not get the sinus rhythm. Then we should consider for amiodarone. Dose should be 300 mg IV or IO bolus, which can be followed by one dose of 150 mg after 3 to 5 minutes if we could not get the sinus rhythm after single dose. But always should make sure CPR should not be stopped during drug administration. Pediatric dose is 5 mg per kg IV bolus, and the side effect are hypotension and bradycardia that should not consider during CPR. Next drug is lidocaine. Many of you during the pre-test pick this answer, which drug is not used in CPR is lidocaine, because very few are aware of that property of lidocaine is anti-arrhythmic also. So lidocaine is an alternative anti-arrhythmic drug used in cardiac arrest and now considered equivalent to amiodarone in refractory VT and VF. This is the 2020 update by AHA, in which previously it was said if amiodarone is not available, use lidocaine. Now they say you can use anything, either lidocaine or amiodarone, both are equally effective. So it is a class 1 anti-arrhythmic drug which blocks sodium channel, and the dose is in CPR is 1 to 1.5 mg per kg IV or IO. And if repeat dose is required, it is same with like amiodarone, not return over spontaneous, then you will use repeat dose is 0.5 to 0.75 mg per kg, but maximum dose should not exceed 3 mg per kg, because as we all know this is a local anesthetic drug, this can cause local anesthetic toxicity. So lidocaine should not be given more than 3 mg per kg. And if we given with endotracheal route, it should be given in higher dose, that is 2 to 3 times of IV dose. So lidocaine comes in 2% vial. Most of you have seen this diet. It comes with the name of Xylocard in a hospital setting. 2% means 20 mg per ml, around 20. That comes in 21 point something milligram, but around 20 mg per ml. So adult dose would be around 3 to 5 ml IV in adult. So we can anytime give lidocaine in refractory VT and VF 3 to 5 ml in an adult, around 60 kg. It gives voice prompts automatically whether rhythm is shockable or not shockable.
that goes as a vaccine. In presence of water or other liquids, wipe it off, remove the moisture, then apply pads. In case of implanted defibrillator, that is internal defibrillators or pacemakers, use your AED pads away from 1 to 3 inches away from that pacemakers or implanted devices. In case of transdermal medication patches, do not apply patch over the patches because it will lead to accidental extra doses of the drugs into the circulation. Apply these pads away from the patches. In case of drowning, wipe off the chest and clear the chest from liquid. And then apply pad. Clothing and jewelries. Do not waste time on removing clothing and jewelries. Just make them aside so that they shouldn't come between the right collarbone and the left axilla. So we have this defibrillator with us, which can be converted into AED. It has 2 modes. It is biphasic. और डॉक्टर ऑफिस का टीम ने जो ऑर्गेनाइज किया हम लोगों ने आपके लिए छोटा सा प्रयास का हमारे तरफ से इस CPR की ट्रेनिंग में देखिए मैक्सिमम अपने मेडिकल प्रोफेशनल वालों को सब पाने कीजिए। ये खास करके मेरा भी पहले एक्शन में मेरा करने लिए कराया हुआ तो एक अभी एकदम पूरे वर्ग पर हम लोग मेडिकल कॉलेज में तो किया ही था, बाकी सभी स्कूलों में जाके CPR का डेमोन्स्ट्रेशन किया था, हमने ट्रेनिंग दी थी। तो जब मेडिकल प्रोफेशन में आपको डॉक्टर तो आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट इसके बारे में आप कोई भी मतलब संशय नहीं होना चाहिए। ALS को हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में जब भी कोई पेशेंट को मान लो सडन कोलैप्स हो जाए, हाउ टू टैकल दैट पेशेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट and the information provided by our team is near about 100% accurate and you should learn it. If you have any problem, you should contact us. Unfortunately, we are running short of time, otherwise we should have allowed you to hand on the dummies so you could have assessed yourself. Doing a CPR, our aim is not only you should do the CPR, you should do the CPR in a proper way. As described by the Dr. B, is that while delivering the CPR thrust, it is hard and fast. Quickly you have to give 100 thrust to the chest. And thrust should be in the midline. Midline is before the external lower bone and above the dignified. There are less chances of being fractured. Usually, we are not knowing how to do the CPR or giving the cardiac compression. We use ending the rib breaks and unsuccessful CPR revival. So, by doing this CPR, you should do it properly. Success rate depends on the luck and the situation. Most of us, hopefully, we can revive few of patients even at our home, and our neighbors used to call us and our college. So we should be able to diagnose it. If having problem, try to resuscitate it. And in wards, we have provided the resuscitation kit. All the wards having the resuscitation kit, where you will get the bag, LMA. You use it and do the best possible in that endeavor. Thank you all again. You are Thank you, sir.